हेलो दोस्तों, आज हम 5 के सिक्के के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने वाले। हम सिंपली इस 5 के सिक्के को नाइट्रिक एसिड में डालते हैं। क्योंकि 5 का सिक्का कॉपर का बना हुआ होता है तो 100% नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट जरूर करेगा। तो इससे होगा क्या? तो चलिए पता लगाते हैं कि क्या होता है अगर हम 5 के सिक्के को नाइट्रिक एसिड में डालते हैं। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, a life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, a life destroyed.
first time of today. तो दोस्तों मुझे अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है कि इस 5 के सिक्के को नाइट्रिक एसिड ने पूरी तरह खा लिया है और हमारे पास बचा है सिर्फ ये कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें 5 का सिक्का है ही नहीं। तो दोस्तों हमारा 5 का सिक्का तो ख़त्म हो चुका है और हमारे पास बचा है ये कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। लेकिन हुआ क्या, जब मैंने 5 के सिक्के को इस नाइट्रिक एसिड में डाला तो कॉपर का होने की वजह से उससे धीरे धीरे रिएक्ट करने लगा और बदल गया कॉपर नाइट्रेट में और साथ ही साथ निकलने लगी NO2 गैस। दोस्तों ये काफ़ी ख़तरनाक गैस हो सकती है। तो गाइज आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इसका कलर किस तरीके से धीरे धीरे चेंज होने लगा और लास्ट में बचा हमारे पास सिर्फ ये कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। ओके गाइज, अब आप समझ गए होगी कि क्या होता है जब हम 5 के सिक्के को नाइट्रिक एसिड में डालते हैं। लेकिन आप ऐसा घर पे करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है और ये आपके स्किन को भी जला सकती है। और NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो इससे निकलती है वो काफ़ी जहरीली गैस होती है और इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।